Good morning, students. We'll be covering preparing for job interview, common questions and answers. That means whenever you go in for an interview, what are the common questions which are asked? We'll be discussing that in the class today. We would definitely be touching upon all those aspects which are crucial for any job interview, irrespective of which industry job you are looking, which kind of company you are going. There are some standard job interview questions, and your objective should be to prepare for them, right? So basically, when you try and understand, interview as a process, first and foremost thing which you must do is you must start thinking like an interviewer. You must start thinking like an interviewer. When you start think like an interviewer, you would definitely be understanding so many aspects from interviewer's point of view. And when I say you will start be able to understand from interviewer point of view, that means you are basically doing what you are basically trying to understand that what are the worst fears of the interviewer. So when I say the worst fears of the interviewer, what I need to understand is you will make you are going to assure the interviewer, you are going to build that confidence in the interviewer that you can make the company a better than what it was earlier. You will be able to contribute positively to the organization, and you're going to make the manager's life easier. That means whichever team you will be part and parcel of, you will contribute positively, and the person's professional life, the team leader's professional life would be much better because your contribution is good. And another thing you have to assure is you that the manager will become more successful with your contribution. So that is what is very very important from your point of view. So your goal should be this only. So basically, what you need to convince is that you are the best person, or you are the best candidate. Suppose there are many other candidates in the interview, you have to basically prove what that you are one of the best, तभी selection होगा, right? अब ये कैसे होगा, वो उसके लिए आपको तैयारी करनी है. तो पहली चीज ये बात आती है कि कौन से तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. डेफिनेटली हर इंटरव्यू प्रोसेस डिफरेंट होता है, हर इंटरव्यू यूनिक होता है. पर कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि रूटीन क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि मैनेजर या इंटरव्यूअर वो पूछना आपके बारे में पता करना चाहता है, चाहे से वो आपका बैकग्राउंड हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, फैमिली बैकग्राउंड हो, अबाउट यू एज अ पर्सन, your different skill sets which you have, your aptitude and attitude, your personality, what kind of a person you are. ये सब चीज़ें बहुत ही important होती हैं इंटरव्यूअर के लिए. और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी के आधार पर पूछे जाते हैं, राइट? Now, basically, when you talk about job interview, the common question, the first foremost question which is asked is, tell me about yourself. अब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अलग अलग होता है. कुछ कंपनीज पूछती हैं कि आप वो बताइए जो आपके सीवी में नहीं है, टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट देयर इन योर सीवी. Sometimes they ask, tell me about yourself, can be a straight question, or it can be in some other way. But the point is, you have to talk about yourself, right? And here, how will you answer is very very crucial. And let me tell you, ये जो क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये पहला क्वेश्चन होता है. ये पहला क्वेश्चन होता है इंटरव्यू प्रोसेस में. जैसे ही आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए बैठोगे, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो आई वांट यू टू ऑल पिक अप योर हैंडबुक नोट्स. आप अपना पेन, पेपर, पेंसिल, डायरी उठा लीजिए और इसका जवाब लिखना चालू कर दीजिए अभी. आई गिव यू 10 minutes फॉर दिस. यू हैव टू राइट नाउ डू दिस एक्सरसाइज, that write the answer of this question, tell me about yourself. It should be brief. It should not be more than in terms of time, I think
one or two or max 3 to 5 minutes is 5 minutes भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 2 minutes or 3 minutes is enough, where you need to prepare that how you going to tell about yourself. अब तो आप लोग लिखना चालू कर दीजिए. Then we will. I would request you to share also. So I'm. Any queries on this? Any queries on this? या आप पहले लिखिए, then I will answer. I'll give you 5 minutes to write this. uh, Tell me about yourself. सबके समझ में आ गया क्या करना है? अगर आ गया तो चैट बॉक्स में yes डालिए. Have you understood what has to be done? Are you all with me? I want to see all yes. There are around 8 students in the class, and I want everybody to say yes. So I'm muting myself.
I hope you all are answering. Any problems, any doubts you have, please share. There are some students of section C. I would request them to please join the right class because this class is for section A. You must be missing some other class. Please check your timetable. Utkarsha is done. Very good. What about others? What about others? Have you completed? सबने कंप्लीट कर लिया है क्या? Yes, ma'am. जिसने कंप्लीट कर दिया है डन डन डाल दे, यस डाल दे, कंप्लीटेड डाल दे, चैट बॉक्स में बताए कि कंप्लीट कर लिया है. Any problems? Somebody has asked a question. Interview के time hand movement कैसे होने चाहिए? Good question. I will answer it. Let everybody complete. Very good question. I will ask. I will answer this. और किस किसने कर लिया? डालते जाइए. Only Utkarsha, Shivangi, and Nikita have done. What about others? Aishwarya, Aman, Neha, then Sagar. Please put it in the chat box if you have done. Aman has done very good. Sagar, Saloni, Shivangi. Please put it in the chat box if you have completed so that I can discuss further. I'm waiting for you. Good. Aishwarya also done. What about others? What about others? Neha also done. Very good. I'll wait one more minute. Saloni also done. Very good. Very good. ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव डन. जिसने नहीं किया है वो पूरा करें. अब बताइए कौन शेयर करना चाहेगा? कौन शेयर करना चाहेगा? आई वॉन्ट यू टू प्लीज रीड आउट. कौन बोलना चाहेगा? अनम्यूट करिए और बोलिए आपने क्या लिखा है. यस, यस उत्कर्षा, प्लीज गो एड. अनम्यूट कीजिए एंड प्लीज टॉक. First of all, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग.
Hello, ma'am. I am Utkarsha. I have done my BBA from Soft Vision College. There are three members in my family, which is mother and elder brother and me. My hobbies are dancing and singing. I have completed my first year in classical dancing and third year in classical singing. I like to interact with new people and uh, I love to learn about new things. Thank you so much, ma'am. Okay, good, Utkarsha. Very good. Anybody else? Anybody else would like to share? Anybody else would like to share? Anybody else would like to share? Utkarsha has very nicely pointed out. Anybody else? Yes, Neha, please go ahead. Unmute and please go ahead. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I am Neha Gupta and I have completed my graduation from St. John's College, Agra. Currently, I am pursuing MBA from Sage University. I belong to a nuclear family. My father is a businessman and my mother is a housemaker. I worked as an intern under the sales associate in State Bank of India Life Insurance. I am passionate about learning new skills. I have good knowledge on MS Office tools and seeking for new opportunities that challenges me more. Thank you. Very good. Very good, Neha. Very good. Anybody else would like to share? Tell me about yourself. Please share. Anybody would like to share? Anybody else? Hello. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. I am Nikita Header Hmm. and hails from Indore. Hmm. I have completed my graduation from Renaissance College of Commerce and Management. Now I am pursuing MBA from Sage University. Hmm. My hobbies are listening music, watching TV. I have good knowledge of MS Word, MS Excel. Hmm. My weakness is my soft, yeah, emotional nature that sometimes harms me. That's all about that. Okay. Okay. Anybody else? Now, all of you have done it nicely. Now, I'll just give you a very quick feedback in terms of what actually should be covered. And basically, and tell me about yourself. What you have to actually do is uh, you have to basically highlight your background to start with, and then you need to relate it with your current job. You have to basically put in and include who you are as a person. Where do you come from? You come from which place, your background in terms of the place, the location, because that shows your belongingness. Then what you have done in your studies, very briefly you can always talk about. For example, who talked about dancing, singing, and you have done from in your Me, ma'am. Utkarsha. Utkarsha. Utkarsha, huh? So Utkarsha, if you are talking about your passion, and you said you have done your graduation, Utkarsha, in your in singing and all these aspects. So probably your next question which may come to you is why you have done MBA, because why you have not pursued your passion and your studies also in terms of music. So you need to Okay, ma'am. prepare your answer on that. Secondly, you may be appearing for a particular job. Now that job requirements would be different. So you may have a question in terms of how can your learnings from music would help you in your current job. Now this goes with all. ये सबके लिए ही वैलिड है कि आपने जो भी हॉबीज बताई हैं, किसी कोई स्पोर्ट्स बताएगा, कोई सिंगिंग बताएगा, कोई रीडिंग बताएगा, कोई म्यूजिक बताएगा, तो आपने उससे क्या सीखा, और आप अपने बैकग्राउंड को करंट जॉब से कैसे रिलेट करते हो, क्या आपकी लर्निंग्स थी, वो मायने हैं रखता है। तो वो आपसे कैसे शेयर करोगे उसको, वो आपको इंक्लूड करना होगा। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू एवरीबडी। Yes, ma'am.
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से किसी ने अगर रीडिंग बोला है हॉबी, तो उससे पूछा जाएगा कि आप क्या पढ़ते हो। यू शुड बी रेडी विद दोज आंसर्स। देखिए, जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ ऐसा क्वेश्चन है जिससे कि इंटरव्यूअर को क्लू मिल जाता है कि और क्या क्या आपसे पूछना चाहिए। इनफैक्ट पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में आप ही इंटरव्यूअर को बताते हो कि क्या पूछना है, बिकॉज एवरी वर्ड विच यू आर अटरिंग, जो भी आप बोल रहे हो, उसी से दूसरा प्रश्न निकल के आता है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज द रीजन आई एम स्पेंडिंग द होल क्लास ओनली ऑन दिस। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन इन एनी इंटरव्यू, राइट? फिर आप स्टडीज के लिए के बारे में बताइए, यू नो हाउ यू विल बी एज अ प्रोफेशन। किसी ने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करिए कि वीकनेस के बारे में बात ना करें, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें। अवॉइड कीजिए वीकनेस के बारे में बात करने को अनटिल अनलेस सबसे पूछा जाए, ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ माय feedbacks and some of my inputs in terms of helping you to understand how to answer tell me about yourself। और कोई शेयर करना चाहेगा तो I can give you the feedback। Anybody else? Anybody else? कोई और पूछना चाहेगा? कोई और बोलना चाहेगा? सागर, सलोनी, शिवांगी, anybody? You can unmute and talk what you had written। Okay, so I'll go ahead। आप लोगों ने जो भी लिखा है उसको रिफाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज विल योर एजुकेशन और ट्रेनिंग हेल्प यू इन दिस पोजीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे आप एमबीए कर रहे हो, तो जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है, कोई सर्टिफिकेशंस अगर आपने लिए हैं, तो उसको आप कैसे कनेक्ट करोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग आपको करंट जॉब में हेल्प करेगी, राइट? Then next question, here you need to demonstrate your capacity to make practical application of the formal knowledge and training and certifications whatever you have taken। ये आपको करना होगा। ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डिड यू स्पेशलाइज इन योर पर्टिकुलर फील्ड। आपने एमबीए क्यों किया? आपने कोई पर्टिकुलर, आप बोलोगे मेरे पास ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग और फाइनेंस है, तो पूछा जाएगा मार्केटिंग एंड फाइनेंस ही क्यों है आपके पास। अगर बिजनेस एनालिटिक्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, एचआर है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, तो आप यू नीड टू जस्टिफाई व्हाई दिस स्पेशलाइजेशन यू हैव चूजन, right? Am I making some sense? Please respond। Yes, Any ma'am. queries? Any queries? There are hardly 2-3 minutes left। Ma'am, Please। ma'am, then what is the best suitable answer for this question? Like, why did you choose MBA or why did you choose business analytics field? There can be no standard answer for this question, because everybody's reason would be different। Everybody's reason would be different। If I ask you what will be your answer, आप बताइए, आप क्या जवाब दोगे? फिर I can help you in improving it। It's like just because I have interest in business analytics। ओके, उसके अलावा आप क्या और ऐड कर सकते हो? I have no idea about it। No, you That's have why I'm asking। no उस देखिए इसके Ma'am, लिए I will think about it and then I'll share you with you। you think about it। Right now what I can suggest you is that you can say that in the coming future business analytics has got a very important role, technology is playing very important role in general in the lives of people in business and trade, and analytics is definitely, applications of analytics is everywhere in every field। And you can also talk about the applications of AI and other specializations which you may have in business analytics, because business analytics is a very broad area. There are various sub areas in business analytics, right?
So you need to understand that and then prepare the answer. It should not be what I have told you, you have written down and you say. You have to frame your own words, क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो वो आपके शब्द होने चाहिए, किसी और के नहीं. मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कारण है, पर वर्ड्स आपको देने होंगे उनको, और आप उससे कन्विंस होने चाहिए. और तो उसका तरीका ये, एक मैं एक स्टैंडर्ड तरीका बताती हूँ सबके लिए, कि जो जो सबको ही फॉलो कर सकते हैं. जिस भी एरिया में आपका स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ें. जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो पहली चीज आपको समझ में आएगा कि आपका उसमें इंटरेस्ट है, और आप पहला तो ये रीजन हो जाएगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट है. तो दूसरा रीजन ये होना चाहिए कि उसमें आगे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप स्टूडेंट्स आजकल बिजनेस एनालिटिक्स ले रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. उसके अलावा आप अपना भी कुछ करना चाहते हैं तो उसमें एनालिटिक्स की नॉलेज आपको हेल्प करेगी. राइट. तो इसी तरह से जो भी आपने स्पेशलाइजेशन लिया है, पहली चीज आपको ये बताना चाहिए कि आपका उसमें इंटरेस्ट है. दूसरी चीज आपको ये बताना चाहिए कि वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है. कैसे हैं वो आपको एग्जाम्पल्स निकालने पड़ेंगे. और उसके अलावा आपको ये बताना पड़ेगा कि वो करियर अपॉर्चुनिटीज भी देता है, बिकॉज ऑफ कोर्स जॉब एंड करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. राइट. एम आई मेकिंग सम सेंस टू यू? एनी क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Thank you. Welcome. Anybody else has got any query? You all will be able to prepare answers on all these three which I have discussed today. Tell me about yourself is one of the most crucial question. Number two, in what ways will your education or training will help you in this position? Number three, why did you specialize in your particular field or in particular specialization, and so on. Right? So who's taking the attendance today and who's going to share the attendance? कौन ले रहा है सेक्शन ए की अटेंडेंस? There is nobody who's coordinating section A attendance. कौन सबसे रेगुलर है? I'll give that responsibility. सागर आप लोगे? सागर, will you take this responsibility? You are regular. मैम स्क्रीनशॉट लेना है ना? स्क्रीनशॉट एक्सेल में बनानी है. स्क्रीनशॉट भी ले लेना और एक्सेल में भी डाल देना. मैम एक्सेल में बनाते नहीं आती मैम. अच्छा.